written as K into the concentration of A to the power 1. Now, when I will equate both of these, I can write minus dA upon dt is equal to K into the concentration of A. Now, I will separate the variables from the RHS concentration of A. I will put it on the left hand side and dt will go on the right hand side. I will have dA upon A is equal to minus K dt. Now I will integrate now. So integrate on both sides. Also guys, please turn your cameras on. Focus mode is already on, so you can turn the cameras on. Now, when I integrate on both sides, I will have integration of 1 upon concentration of A, dA. So concentration of A will go from A0 to A is equal to initial concentration से final concentration तक, है ना, is equal to minus K will be as it is outside the integration sign and dt. dt टाइम 0 से कहां तक जाएगा, t तक जाएगा. What is the integration of 1 upon x? Integration of 1 upon x dx क्या होता है? Anyone remembers? Integration of 1 upon x dx. Yes, Aisha. अच्छा नहीं. What is the integration of 1 upon x? Oh, no one. किसी के पास मैथ्स नहीं है? No one is having maths here. अच्छा, तो याद रखिएगा 1 upon x dx का होता है ln x. Okay, ln क्या होता है? ln is log with base e and x. Fine. So here you will write ln x and the limit will be from a0 to a. This will be equal to minus k. Integration of dt will be t from 0 to t. Now I will plug in, oh, my bad. ln x नहीं लिखना चाहिए था, ln a लिखना चाहिए था. I will plug in a and a0, so I will have ln a minus ln a0 is equal to minus k and t minus 0. So आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? It will be t only, right? Minus kt. Now you can get the formula as ln a is equal to ln a0 minus kt. ln a0 minus kt. Kt can be written as ln a0 minus ln a. Using the properties of log, I can write kt is equal to ln a0 upon a. And from here, when I change ln to log, I can write this as kt is equal to 2.303 log of a0 by a. Log of a0 by a. तो ये आपको एक एक्सप्रेशन जो है इसको याद करके रखना है. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज मोस्टली इन द न्यूमेरिकल्स वगैरह. kt is equal to log a0 upon a. Okay, please write this down. Raise your hand once you're done. Also, Amna, your camera is not on. Is there any problem? Yes, Amna. Am I audible, Amna? Yes, sir. So please turn your camera on. Aisha, you don't have camera. This Mariam Fatun, what about you? Is there any problem, Mariam Fatun? Please turn your mic on. Yes, sir. What happened? आपका भी camera नहीं चलता. Okay. Parker कौन है? Mir, what about you? Mir. Mir, am I audible? Yes, sir. Sir? Yes, Okay. Parker, you're saying something. Sir, can you please explain the integration part again? ये आपको पता है कि नहीं, ये बताइए आप जरा.
No, sir. ये तो अब ना, ये आपको मतलब पता रहना चाहिए। फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ना इंटीग्रेशन, आपने नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन जरा भी? पढ़ा है ना? माइक ऑन रखें ना, माइक ऑन रखें। माइक ही ऑन नहीं है आपका। हाँ, पढ़ा है आपने ना? जी। ओके, सो सी 1/x का होता है ln x। तो वही क्या है ना, 1/a है तो ln a हो जाएगा। देन लिमिट प्लग इन करते हैं ना, एक बार ln a की जगह हमने a डाला, फिर a नॉट डालेंगे, अपर लिमिट, फिर सॉरी मतलब ऊपर जो उसको डाला, फिर लोअर लिमिट डाला, है ना? जी। ठीक है, फिर t को भी वैसे ही किया, t में वैसे ही करेंगे। देखिए t का अगर आपको करना है ना, तो t-0 हो जाएगा, t ही होगा, दैट इज वाई डायरेक्टली प्लग इन t हियर। गॉट इट? Yes. और इससे आगे कुछ और? एनीथिंग एल्स? नो ना, ठीक है। Please raise your hand once you're done writing. Parker is waiting for you, I guess. Parker, Sidra and Aisha. Aisha, आपको समझ में आया? आयशा? Yes, sir. ओके। Parker is waiting for you now. Raise your hand once you're done writing. बाकी लोग, you can lower your hands. Sidra, your camera is also not on. मीर, आपका अभी तक नहीं हुआ है. You said just 1 second. Parker done? Okay, Parker, fine. Now please see here, guys. Yeah, Parker, you can lower your hand now. ध्यान दीजिएगा. Now let us talk about the T half of first order reaction. ठीक है? Please see, don't write anything. T half of फर्स्ट ऑर्डर, प्लीज डोंट राइट, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, लिखना नहीं है. बताइए, व्हाट इज द टाइम एट टी हाफ? टी हाफ जब होता है तो टाइम क्या लेते हैं? अरे बोलो भाई, टाइम क्या लेंगे? टाइम विल बी टी हाफ ओनली ना. लास्ट क्लास आप लोग रीड करके नहीं आए हैं क्या? पढ़ के नहीं आए हैं? गाइस कीप योर माइक ऑन, ऑल ऑफ यू गाइस. ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज टर्न योर माइक ऑन. बताइए, टी तो टी हाफ हो जाएगा. व्हाट विल बी द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी हाफ? What will be the remaining concentration of A at T half? A/2. Please.
व्हाट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए? रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन बचा रहेगा हाफ लाइफ में? जब आधा रिएक्शन हो चुका है तो कितना रिएक्टेंट? जोर से बोलिए, जोर से। रिएक्शन A/2 नहीं, A0/2। इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा बचा रहेगा ना। Make sense, yes or no? I want the mic on, guys. Aisha, Parker, Mir, Sidra, all of you please keep it. Have your mic on. Mir, have your mic on. Sidra, have your mic on. Mir, you also. ठीक है। Now tell me, आप लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पे लिखा है the integrated rate law expression KT is equal to 2.303. Tell me, what is the formula for first order reaction? KT, बोलो भाई, बोलिए। KT equals to 2.303 log log A0 by A। ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट इज, देखिए T तो क्या हो जाएगा, T हाफ इज इक्वल टू 2.303, K को नीचे ले आए, ठीक है, log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रहेगा A0। व्हाट इज A की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट वुड बी द वैल्यू? हाँ, A0/2। डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज, बोलो भाई, डिनोमिनेटर, हाँ, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है? अरे बाप रे, ये 2 ऊपर चल जाएगा ना, न्यूमरेटर होता है। क्या हो गया गाइस, आप लोगों को कुछ नहीं पता क्या? सब भूल गए आप लोग? क्या बोल ही नहीं रहे हैं? ठीक है, तो A0 से A0 कटेगा और 2 ऊपर चल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ यू विल हैव log 2। Now, if you plug in the value of log 2 and multiply it by 2.303, you will get the value of 0.693 divided by K। 0.693 divided by K। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, T half is equal to one constant divided by a constant. So T half of a first order reaction, it is only dependent on what? Only dependent on the rate constant. It is not dependent on the concentration या initial concentration. ठीक है, so please listen, don't write anything. पहली चीज, T half of first order reaction is independent of initial concentration of reactant. That means if they are giving you T half, then they have already given you K also. Make sense, yes or no? Please tell me. अगर वो आपको T half या फिर रेट कांस्टेंट दे रहे हैं, they are giving you T half और रेट कांस्टेंट, तो उसमें से मतलब दूसरी चीज तो दे ही दिए होंगे। If they have given you the rate constant, that means they have also given you T half. Make sense? क्योंकि एक ही फॉर्मूला है ना, you will plug in the values and you will get the T half. अगर आपको K दिया जाएगा, then can you calculate T half? बोलो yes or no? क्या भाई yes no नहीं बोल रहे हैं यार? Yes sir. लिखो भाई, माइक ऑफ करो यार, तुम लोग बेकार है। लिखिए, if T half is given, yes sir no sir नहीं बोलने हो रहा, given, then K is also given, then K is also given, and vice versa. Then write 300% of first order reaction. T, when T 100%, then T will be equal to T 100%, and A will be equal to A0. A will be equal, no, sorry, A will be equal to 0 because there is 0 amount of reactant that is remaining. So I can write T 100% will be equal to 2.303 divided by K log of A0 divided by A. The remaining concentration of A is equal to 0. Therefore, T 100% will be equal to 2.303 divided by K log of A0 by A. Now, A0 by A. What is A here? A is equal to 0. Now, anything divided by 0, this thing will become infinity. So log infinity will be again
infinity. If log infinity is infinity, if you multiply infinity to any number, 2.303 divided by k, then whole value will also become infinity. That is why t 100% it is equal to infinity. T 100% it is equal to infinity. So we can also write one more point. First order reaction never goes for completion. First order reaction never goes for completion. Write it down, raise your hand also. अब पढ़ के आया करे भाई, एग्जाम इतना नजदीक हो गया, पढ़ के आया करे थोड़ा पिछले क्लास का. Please raise your hand once you're done writing. Waiting for Parker, Amna, Aisha, and Sidra. Also Mir. Waiting for Parker, Amna, and Sidra.
See you guys. Calculate the half-life of first order reaction from their rate constants given below. So you have been given the rate constant by the unit of rate constant, that is time inverse. Understand that these are first order reaction and these are the rate constants of first order reaction, and they are asking you half-life. So the direct formula is what? T half is equal to, बोलिए guys, T half is equal to 0.693 by K. if you take the first question here, the first one, the T half will be equal to 0.693 by the rate constant. The rate constant is 200 second inverse, right? So 0.693 डिवाइड बाई 2 बेसिकली. देखिए इनको ना डिवाइड करने में ऐसा मत कर दीजिएगा कि 200 से डिवाइड कर रहे हैं आप, है ना? So please use your brain and 0.693 को 2 से डिवाइड कीजिए and then 100 जो है आपका 10 to the power माइनस हो जाएगा, उस तरह से कैलकुलेट किया कीजिएगा, ठीक है? So 0.693 divided by 2 will be equal to 0.3465 हो जाएगा ना? हाँ 46 पॉइंट, हाँ ठीक है, 3465. Second inverse will go above and it will become what? It will become seconds. This will be multiplied by 10 to the power minus 2 also. ये 200 था ना, तो 2 into 100 to the power minus 2 seconds. So this will be equal to 0.003465 seconds. ठीक है, उसी तरह सेकंड का और थर्ड वाले का निकाल के बताइए कितना आ रहा है आंसर. सेकंड वाला जो होगा मिनट्स में होगा, फोर्थ वाला जो होगा ईयर्स में होगा. Guys, take 2 more seconds. Sorry, 2 more minutes. सर Just tell me. 10⁻² कैसे है? 0.693 divided by 2 into 100. 0.693 divided by 2 will be equal to 0.3465 divided by 100. So this will be equal to 0.003465. Okay, need. ओके सर.
नो, यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। आपको जो मिनट में दिया हुआ है, आप हाफ लाइफ उसका मिनट में आंसर आ जाएगा। ईयर्स में दिया तो ईयर्स में आ जाएगा। हाँ, पार्कर फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड हाँ, सेकंड वाला भी सही है, पार्कर, वेरी गुड। नो, आमना, ये आप 1 2 करके हमको बताइए ना। टी हाफ लिखने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। यू जस्ट टेल मी फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का या थर्ड का। आपने जो आंसर भेजा किसका आंसर है ये? फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का? सेकंड का सर। तो गलत है सर। तो डिवीजन तो दो, आपने कन्वर्ट कर दिया क्या इसको सेकंड्स में? किसमें कुछ किया है क्या? बहुत ज्यादा गलत है आंसर आपका। यस। नहीं, मिनट हमने तो कहा था मिनट का मिनट में आ जाएगा, ईयर्स का ईयर्स में आ जाएगा। हमें क्यों सुनते नहीं है आपने? अगर, हाँ, आयशा करेक्ट, वेरी गुड। और 2 मिनट ऐसे ऐसे पता नहीं क्या लिखा है आपने, आंसर लिखे सर, ठीक है ना? इट शुड बी सेकंड, फिर उसके बाद इट शुड बी नंबर एंड देन उसका यूनिट। सेकंड का यूनिट से जरा यूनिट नहीं लिखा है, नंबर्स ठीक है। आई होप यूनिट्स, हाँ ठीक है, यूनिट्स लिख लीजिएगा 17, ओके। सेकंड में यूनिट होगा मिनट, थर्ड में होगा ईयर। ये देखिए 2 मिनट हो चुका है, काफी लोगों का आंसर नहीं आया। टी हाफ इज इक्वल टू सेकंड वाले केस के लिए इट विल बी 0.693 डिवाइड बाई, एज इट इज। अगर आप लोग लिखना सीख जाए ना, एटलीस्ट जब जब आप लोग क्लासरूम में हैं उस टाइम, तो जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह लिखना सीख जाएगा, आप लोग इस आंसर गलत नहीं होंगे। 2 मिनट इनवर्स 3 डिवाइड बाई 2, तो अभी क्या हमने कितना गया था, 0.3465। मिनट इनवर्स ऊपर जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? इट विल बी मिनट्स। थर्ड इज 4 years ना, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 by the rate constant, that is 4 year inverse. So this will be equal to, देखिए 0. डिवाइड कीजिएगा इसको तो आपके पास 0.17 ऐसे करके कुछ आएगा आंसर, ठीक है ना? सो इफ यू डिवाइड दिस बाई 4, यू विल हैव 0.17। तेरह का हो गया 765, कितना हो जाएगा? 60 का हो जाएगा 30, फिर उसके बाद 2 5, हाँ। Is anyone saying something? Year inverse will go above and it will become years. That's it. Copy this down. I'm giving you guys 30 seconds to copy it. Copy it quickly, and then we move to some other questions. Wait, Mariam. हाँ सही है। नहीं, 3 5 नहीं होगा ना, 3 2 5 होगा ना। वेट वेट वेट, मरियम, कैसे डिवाइड किया आपने? Yes, sir. 693 डिवाइड बाई 4, वन जा कितना हो जाएगा? 29, एंड देन 4 7 4 28। देन कितना बचेगा? कितना बचेगा भाई यहाँ पे? एक बचेगा और फिर 13, है ना? 3 जा, 3 जा इट विल बी हाउ मच? 12। फिर भी तो एक बच रहा है ना, 1 एंड देन 0, फिर 2 जा। हमने जीरो से लगा लिया बिकॉज आई एम डीलिंग विद अ डेसिमल पॉइंट हियर ना। बात समझ में आ रही है आप लोग को? है ना? आई एम डीलिंग विद अ डेसिमल पॉइंट, इसके आगे इतना भी जीरो आप लगा सकते हैं, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट।
फिर उसके बाद आएगा 2 जा तो 8 हो गया, फिर कितना बचेगा 2, 1 0 आ गया तो 5, 17325 होगा ना डिवीजन करने से। Write another question. No need to raise hand, guys. Right, the value of rate for a reaction is 60-second inverse. Calculate the time taken for 5 gram of reactant to get reduced to 3 grams. ध्यान दीजिएगा थोड़ा ना यार प्लीज, या तो जवाब दो, नहीं तो फिर हम सवाल सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे हम। ठीक है, एक चीज थोड़ा डिसाइड कर लीजिए आप लोग, किस कुछ जवाब देना है या नहीं देना है। अदरवाइज हम सिर्फ सवाल फिर सीधा सॉल्व करेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं हम। यहाँ पूछते रहते हैं आप लोगों को, कोई जवाब नहीं आता, सिंपल सवाल करते रहते हैं। एक तो कैमरा नहीं ऑन रहता है आधे लोगों का, पता नहीं पढ़ने आए हैं क्या करने के लिए आए हैं। रीड द फर्स्ट सेंटेंस till 60 seconds. The value of rate constant. देखिए हम ना आप लोग सबको ना इंडिविजुअली ये कहना चाहते हैं, आप ये मान के चलो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बाकी बच्चों को छोड़ो। आप बाकी बच्चे अगर जवाब नहीं दे रहे हैं छोड़ दीजिए, नहीं जवाब देने दीजिए। आप अगर पढ़ने के लिए आए हैं तो आप प्लीज जवाब दीजिए, ठीक है। The value of rate constant for 60 seconds. As soon as you get a number ना, तो नंबर पे खास ध्यान रखिएगा। तो यू हैव टू नोट डाउन दिस नंबर, है ना। तो न्यूमेरिकल करने का अगर आप लोगों को मिस्टेक से बचना है, डेटा सही से कॉपी करना है, तो डोंट रीड द होल क्वेश्चन एंड देन राइट द डेटा। आप जैसे जैसे सवाल पढ़ते जा रहे हैं ना, उसी टाइम डेटा लिखते जाइए। ये 60 सेकेंड इनवर्स, सो ये क्या बता रहा है, इन्होंने तो यहाँ पे दिया ही हुआ है दैट इट इज रेट कांस्टेंट। तो क्या होता है रेट कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है, क्या लिखेंगे हम, 60 सेकेंड क्या है, कैसे लिखेंगे, k is equal to 60 second inverse. Yeah, now when it is 60 second inverse, तो इस यूनिट से हमको क्या पता चल रहा है, that this reaction is what order, फर्स्ट ऑर्डर, है ना। तो एक तो हमको लगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अब आ गया है, दिस इज अनदर इन्फॉर्मेशन। उन्होंने लिया दिखा, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, बट दिस इंपॉर्टेंट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है zero order. So this is a crucial information that you're getting from where you're getting this from the unit of rate constant. तो ये सारी चीजें बहुत सारे सर कैसे पता चलेगा फर्स्ट ऑर्डर का लगेगा सेकंड ऑर्डर का, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के, ठीक है। The time taken for 5 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू गेट reduced to 3 ग्राम। तो बताइए 5 ग्राम क्या है, इनिशियल है या फिर फाइनल है, फाइनल। यार थोड़ा यार दिमाग लगा लो भाई। रिएक्टेंट 5 ग्राम से 3 ग्राम हो रहा है ना, Initial. फ्रॉम इनिशियल है सर, इनिशियल। इनिशियल ए नॉट कितना हो जाएगा, इट विल बी 5 grams and the final concentration will be equal to 3 grams and they are asking the time, है ना। इन्होंने क्या पूछा हुआ है, टाइम पूछा हुआ है, टाइम कितना लगने वाला है, ठीक है। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज द सिंपल रेट एक्सप्रेशन, क्या है आपका, kt is equal to, बोलो भाई, kt is equal to 2.303 into log of a naught by a, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, कुछ लोगों को बाद में ये रियलाइजेशन होगा सर ए नॉट बाई ए तो ये तो कंसंट्रेशन होता है, बट यहाँ पे तो उन्होंने ग्राम दिया हुआ है, तो क्या कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, हम बोलेंगे नहीं कन्वर्ट करने की जरूरत है। व्हाई, बिकॉज सी कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर, ठीक है। मोल्स पर लीटर, इसको हम यहाँ पे ऐसे नॉट कर दे रहे हैं ना, यानी कि इनिशियल, और मोल्स पर लीटर फाइनल।
अब यहाँ पे प्लीज एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ये जो लीटर इनवर्स वाला मामला है ना, द कंटेनर इज द सेम, कंटेनर सेम है तो लीटर इनवर्स ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये भी समझिएगा, यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग कि कंसंट्रेशन सेम होगा, आई एम सेइंग कि कंटेनर सेम होगा, कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स अलग होंगे, बट द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी सेम। मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, Yes, उसके sir. बाद छोड़ो यार, ऐसे समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए 5 ग्राम दिया हुआ ना, जिसको अगर कन्वर्ट करना भी है तो समझिए 5 ग्राम इनिशियल हो गया, डिवाइड बाई दिस वुड बी डिवाइड बाई द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड डिवाइड बाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, दिस इज ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, मोलर मास डिवाइड बाई मोलर मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट क्या दे देगा आपको? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या दे देगा आपको? मोलारिटी। हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। नहीं, नहीं समझ में Yes, आया? sir. आया पक्का? आया ना? ठीक है, दिस इज इनिशियल। फाइनल क्या हो जाएगा? 3 ग्राम डिवाइड बाई द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द रिएक्टेंट ओनली, तो मॉलिक्यूलर वेट ही रहेगा, डिवाइड बाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी चेंज नहीं हो रहा है, एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट विल बी सेम, द वॉल्यूम विल बी सेम। तो एट द एंड आपके पास जो रेशियो आएगा दैट विल बी 5 ग्राम डिवाइड बाई 3 ग्राम। क्या ये सेंस बन रहा है कि 5 ग्राम 3 ग्राम डायरेक्ट लिख सकते हैं? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एंड देर आस्किंग टाइम, सो टाइम विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, अभी के ही लिख दीजिए, लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए ही लिख दीजिए अभी। अब फ्रॉम द वैल्यूज, ठीक है, 2.303 डिवाइड बाई के कितना है? 60, लॉग ऑफ ए नॉट की वैल्यू क्या है? 5 डिवाइड बाई 3। हाँ, नेक्स्ट है आपके पास 2.303 डिवाइड बाई 60, log 5 minus log 3 using the properties of log, this will be equal to 2.303 divided by 60। log 5 की वैल्यू क्या होती है? 0.7, log 3 की वैल्यू 0.48। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था log, याद रखना चाहिए आप लोग को log। this will be equal to 2.303 into 0.22 divided by 60। कोई कुछ बोल रहा है क्या भाई? If you calculate this value, इसको अगर आप approximate करके calculate करेंगे, then this will come out to be 8 into 10 to the power minus 3 seconds। ठीक है, इसको calculate कीजिए जरा, देखिए कितना आंसर आ रहा है। देखिए यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आया ना, यहीं तक है केमिस्ट्री। आफ्टर दिस यू हैव मैथ्स, टिल प्लगिंग ऑफ वैल्यूज यू हैव केमिस्ट्री, आफ्टर दैट देयर इज ओनली मैथ्स। ओके, सो टाइम जा रहा है आपके पास, दैट इज 8 into minus 3 seconds।
Raise your hand once you're done. Anyone did calculations? Yes, sir. It's almost 8, right? Yes or no? Sir, it is correct. 8 into 10 raised to minus 3. अच्छा, मतलब उतना ही आ रहा है ना? Yes, sir. Right, another question. First order reaction is 40% complete in 80 minutes. In 80 minutes, calculate the value of rate constant. ठीक है गाइस, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. आप बताइए डिफिकल्टी क्या है इस सवाल में. कुछ डिफिकल्टीज आएंगी आपके पास, है ना. इतना आपको समझ में आ रहा है. रेट कांस्टेंट अगर उन्होंने बोला हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लगेगा. बट क्या चीज नहीं दी हुई है, क्या चीज दी हुई है, व्हाट इज देयर एनीथिंग दैट इज मिसिंग, समथिंग लाइक दैट. फाइंड आउट. आई एम गिविंग गाइस 2 मिनट्स. क्वेश्चन लिखने में टाइम मत बिताइएगा. क्वेश्चन को पढ़िए, जो इन्फॉर्मेशन लग रहा है ना उसको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए और ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टेल मी व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. Okay, so I can see a few mistakes in some of the
आंसर्स यू गाइस मेड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, है ना, जो लास्ट क्लास में टेस्ट हुआ था. एनीवन हु वांट्स टू डिस्कस एनी क्वेश्चन, या फिर आप लोग का आंसर देख के समझ में आ गया? Aisha, I can see the first question was wrong. Amna, first and second was wrong. Sidra, first and fourth was wrong. For fourth, you took a lot of time also. नहीं, एवरेज ठीक टाइम लिया, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, स्टिल यू टुक टाइम देयर. यस, टेल मी, बताइएगा, ठीक है ना? डिस्कस, लेट मी नो एट द एंड ऑफ द क्लास, आई विल डिस्कस दीस क्वेश्चंस विद यू. हाँ जी, बताइए, क्या दिक्कत है इस सवाल में, और इज इट फाइन, हो जाएगा? आमना, you found any problem? Is there anything missing or everything is given? Amna, I'm asking you. Yes, sir. कोई K is रिस्पॉन्स not given. क्या नहीं दिया हुआ है, सॉरी? We have to calculate for the value of K. अरे हाँ, वो तो नहीं दिया हुआ है, तो हो जाएगा कैलकुलेट, बाकी सारी चीजें दी हुई हैं. A not A is not given. हाँ, और बाकी लोग को भी ये दिक्कत लगी, आयशा, मरियम खातून, पारकर, मीर एंड सिद्रा, Yes, sir. है ना? तो देखिए, सो व्हेन यू हैव परसेंटेज वाला सवाल ना, परसेंटेज वाले सवाल के लिए सिंपल सा केस क्या है, देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट. परसेंटेज आया जैसे ही आप ए नॉट ले लीजिएगा 100. ए नॉट कितना ले लेंगे बताइए, बोलो भाई? 100. 100 ले लेंगे, है ना, ए नॉट ले लेंगे 100. एंड इट इज सेइंग 40% कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन. तो कितना बचा हुआ है? 60. 60 ना, है ना, मेक सेंस, ये सुनो. 60%, Yes, sir. if the reaction is 60% remaining, then the reactant should also be 60% remaining. Yes or no, please tell me guys. Yes, sir. ठीक है, और फिर आपको टी दिया हुआ है, टी इज गिवन एज 80 मिनट्स. सॉरी Sir, गाइस, should be टी इज con गिवन है. हाँ बोलिए, यू आर सेइंग should we समथिंग. convert minutes into seconds? नहीं भाई, मिनट को यार शुरुआत से बोलते आ रहे हैं इस चीज को. मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना है. आपको मिनट दिखा, आपको दो चीज दिख जाए ना, अगर कहीं पे मिनट दिख जाए, कहीं पे सेकंड दिख जाए, तब कन्वर्ट कर लीजिएगा. लिख लीजिए इस बात को, ठीक है? आपको एक ही सवाल के अंदर दो चीज दिख गए, मिनट भी दिया हुआ है, सेकंड भी दिया हुआ है, तब तो कन्वर्ट कीजिएगा. बट इफ यू आर सीइंग ओनली वन थिंग, मिनट, देन कन्वर्ट नहीं करना है. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइस, ये सवाल आप लोग आपकी क्लास में बहुत बार पूछा गया है, हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं. मिनट्स को कभी भी सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करना, सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट नहीं करना, ईयर को कहीं भी कन्वर्ट नहीं करना, वीक रहे, मंथ रहे, सब कुछ रहेगा इसमें. हाँ, बट इफ टाइम दो अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है, देन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप टाइम को एक यूनिट में ले आइएगा, ठीक है? नाउ फ्रॉम हियर वी कैन इजीली प्लग इन द वैल्यूज. के विल बी इक्वल टू, रेट कांस्टेंट पूछा ना, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए. ठीक है, प्लग इन द वैल्यूज एंड टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के.
6 into 10 to the power minus 3 minute inverse. सही है. This will be approximately 6.25 into 10 to the power minus 3 minute inverse. कैलकुलेट कीजिएगा पूरा भाई, आंसर मत दीजिएगा बिल्कुल ऐसे आलसी बच्चों की तरह, ठीक है. प्लग इन द वैल्यूज, कैलकुलेट करके ये आंसर इतना आएगा. आप लोग डेसिमल पॉइंट से नहीं कुछ कीजिए तो. कैलकुलेशन वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है, इसमें आसान ही है. रेज योर हैंड इफ डन गाइस. जिन लोगों ने यहाँ तक कैलकुलेशन कर लिया प्लीज रेज. मरियम, इसके आगे कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है. कर रहे हैं ये. अरे भाई, यार मरियम पार्कर, सॉरी सॉरी मरियम खातून, यहाँ इक्वल टू क्यों लिखा हुआ है आपने? 2.303 के बाद आपने सारे इसमें इक्वल टू लिखा हुआ है. इनटू होगा ना. अरे यार अपने अपने इसमें देखिए ना. k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t इज इक्वल टू लॉग 100/60. मल्टीप्लीकेशन होगा वहां पे ना, या फिर कुछ मत साइन लीजिए. इक्वल टू नहीं होगा. चैट में अच्छा हो गया. मरियम खातून का नहीं हुआ है, मीर का नहीं, इस तरह का नहीं. कैलकुलेशन की जरूरत है क्या किसी को? कैलकुलेट करके बताएं हम कैसे आएगा. ए नॉट कितना है? 5 - 3. 100/60 है ना भाई. हाँ ठीक है, उसको कैंसिल किया आपने. ये log 5 जो होता है दैट इज 0.78. और 0.7 और 0.48. ठीक है. डिवाइड बाई 80. 0.11. 2.303 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.11 से तो 2303 33352. सो 2533 हो जाएगा. डिवाइड बाई 1 2 3 4 5. 0.2553 डिवाइड बाई
40 हो जाएगा। ठीक है, सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.25333 को आप क्या लिख सकते हैं? हाँ मैं करेक्ट, सही सही, मीन एग्जैक्ट कैलकुलेशन से वही आएगा आंसर, बट इसको अप्रोक्सीमेट करके आप क्या लिखेंगे? 0.25 डिवाइड बाई 40। 0.25 को क्या लिख सकते हैं आप? 0.25, हाँ उसको ऐसे लिख सकते हैं 0.25 इंटू 1/4 इंटू 10। 0.1/4 को भी क्या लिख सकते हैं? 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10। 0.25 इंटू 0.25 कितना होता है? 625। 0.0625 हो जाएगा, 4 डेसिमल पॉइंट्स है ना, तो 4 डेसिमल पॉइंट से पहले, 4 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट इंटू 10, ये कितना आ जाएगा? 0.625 मिनट इनवर्स। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, एग्जैक्ट कर सकते हैं फिर आप टाइम। एग्जैक्ट कीजिएगा तो थोड़ा, आई मीन इफ यू आर टेकिंग 3 तो अलग आंसर आएगा, बट ये आंसर भी कर दीजिएगा तो गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, आई होप एवरीवन इज डन राइटिंग। नेक्स्ट राइट अ क्वेश्चन। A first order reaction takes 10 minutes for 25% decomposition. Calculate T half। ठीक है, देखिए इसमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? T half। So we know the formula for T half is what? T half is equal to 0.693 divided by the rate constant K. Now, in order to calculate the rate constant K, I will have to use the formula K is equal to 2.303 divided by T log of A naught by A। अब यहाँ पे देखिए 10 मिनट्स दिया हुआ है एंड 25% दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आई कैन से ए नॉट विल बी इक्वल टू 100। ए नॉट कितना हो जाएगा? ए नॉट विल बी इक्वल टू 100 एंड 25% डिकम्पोजिशन हैज अकर्ड इन 10 मिनट्स ना। सो हाउ मच इज रिमेनिंग? 75. कितना रिमेनिंग? 75 विल बी रिमेनिंग। नाउ यू कैन प्लग इन द वैल्यूज। k will be equal to 2.303 divided by 10 minutes, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, multiplied by log of 100 upon 75 a naught by a। Now you can cancel a few things here। 25 4s are 100 and 25 3s are 75। Now this will be equal to 2.303 divided by 10, log of 4 minus log of 3। 2.303 divided by 10, log 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.6। log 3 की वैल्यू 0.48। दिस विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू log ऑफ, नहीं कितना जगह, 0.12, 0.12, 0.12 या 0.12 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो अब आंसर कितना आ जाएगा? अच्छा, एक काम कीजिए, इतने में ही सब्स्टिट्यूट कर दें, इतने में ही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए के की वैल्यू को। ठीक है, बिकॉज के तो उन्होंने निकालने के लिए नहीं बोला हुआ है ना, नो नीड टू कैलकुलेट फर्दर। आप बस यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए टी हाफ इज इक्वल टू 0 divided by k। The value of k is 0.693 as it is. The value of k is 2.303 multiplied by 0.12 divided by 10। 0.693 डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं 0.2303 डिवाइड बाई 10 है तो इंटू 0.12। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अब अगर देखिएगा यहाँ पे ना 2303 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 3 से। 3 3 9, 3 3 0, 3 0 0, 3 3 9 एंड 3 2 6। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.303 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.693। सो यू कैन ऐसे इसको कैंसिल कर सकते हैं आप। 2.303 3 approximately 3 will be 3 divided by 0.12।
ठीक है, दिस विल बी 3 डिवाइड बाई 12/100. This will be equal to 3 into 100 divided by 12. 3 4s are and 4 25s are. So the answer that you will be getting is T half is equal to 25 minutes. देखिए एक बार, if you have any difficulty in understanding the calculations, please let me know. Raise your hand once you're done. Just writing. Aisha, just waiting for you. Done. ठीक है. कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत नहीं हुई ना? प्लीज आंसर. कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हुई ना किसी को? अरे बोलो हाँ या ना तो बोलो भाई. No, sir. No, sir. Right, another question. This is very important question. ठीक है ना, बहुत बार आता है एग्जाम्स में. Show that for first order reaction, time required for completion of 99 percentage of reaction is twice the time required for 90 percentage completion. ज्यादा लोड नहीं लेना इस सवाल में. ध्यान दीजिए. पहले हम निकालते हैं टाइम टेकन फॉर 90 परसेंटेज कंप्लीशन, यानी कि टी 90 परसेंटेज. यानी इफ द 90 इफ कंसेंट्रेशन जो है आपके पास, सॉरी, इफ द रिएक्शन इज 90 परसेंटेज कंप्लीट, तो ए नॉट कितना लेंगे? इनिशियल कंसेंट्रेशन बताइए. व्हाट वुड बी द इनिशियल कंसेंट्रेशन? 100. 100. And the remaining concentration will be 10. 10. We will use this. तो हम लोग T90 परसेंटेज निकाल लेंगे. दिस विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K.
log of 100/10। तो आपके पास जो T90% आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log 10। एंड log 10 की वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल टू 1, है ना? ये 0 से 0 कट जाएगा। तो सो यू कैन राइट T90% विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के। मेक सेंस? yes or no, please tell me guys। ठीक है? अरे बोलो Yes, sir. भाई, हाँ ना तो बोलो जी यार। अब बताइए अगला क्या है? T99%। सो T99% के लिए T विल बी 99%, A नॉट विल बी हाउ मच? हंड्रेड। हद है यार, आप लोग के लिए हद है भाई, हद है। तो इतना आप लोगों को हमने, तो बेकार है भाई ऐसे पढ़ाना। तो A विल बी इक्वल टू हाउ मच? 99% जब रिएक्शन हो चुका है तो 1। यू विल प्लग इन द वैल्यूज। बोलिएगा नहीं ना, तो ये ऐसी चीजें ना उड़ जाती हैं फिर दिमाग से। 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ 100/1। 100/1 विल बी 100 ओनली। और लॉग 100 कितना हो जाता है? लॉग 100 इट इज इक्वल टू 2। अब ये आना चाहिए आप लोग को। अगर ये नहीं आती है आपको कि लॉग 102 होता है, तो भाई थोड़ा सीरियस हो जाइए आप, बिकॉज लॉग वगैरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएंगे और केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 × 2। ये 2 को हमने मतलब कहीं से ही मल्टीप्लाई हो सकता है ना भाई, दो बच्चों को ना ऐसे दोनों जुड़ जाएगा। 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 2। लॉग 100 ही पूरा 2 हो जाएगा, ठीक है ना? 100 का 2 नहीं लिख रहे, लॉग 100 ही पूरा 2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2.303 डिवाइड बाई के। दिस इज T99%, राइट? अब यहाँ पे आपके पास एज यू कैन सी ये क्या है? दिस वैल्यू इज नथिंग बट T90%। T90% ही तो है 2.303 डिवाइड बाई के। सो आई कैन राइट therefore T99% will be equal to 2 times of T90%। ठीक है, छापिए। इसमें अब मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो भी मतलब आ सकते थे वो हमने करा दिया है, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, है ना? एक दो फ्रैक्शन टाइप के सवाल हो तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। विल नाउ लुक एट द ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Write this down quickly। I will give you guys 3 minutes will be enough for this। Raise your hand if you're done। Aisha and Mariam Khatun waiting for you guys। Mariam Khatun, okay।
नेक्स्ट लिखिएगा ग्राफ्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ग्राफ जो बनता है ना, ग्राफ हमेशा बनेगा आपका किसी इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट K multiplied by the concentration of A to the power 1. Now this is Y is equal to mx type of graph. This is Y, M, and this is X. Now इसमें the Y axis is rate and जो आपके पास X axis है that is the initial concentration, है ना, A naught. This A is always the initial concentration because that gives you the initial rate of reaction. Now Y is equal to mx, that means there is no slope and there is no intercept and the slope is a positive slope. Then it will look something like this, passing from the origin. This R is equal to Ke. Then the second graph that we are going to have is from the equation ln A naught is equal to, ln A naught, ऐसे कर लीजिएगा, ln A naught minus ln A is equal to Kt. ठीक है, is equal to Kt, या फिर एक सेकंड रुक जाइए, डोंट राइट दिस, ना ऐसे लिख लीजिएगा इसको, ln A is equal to ln A naught minus Kt. ठीक है, now a very equivalent form of this particular very equivalent form will be log A naught is equal to log A is equal to log A naught minus Kt upon 2.303. ठीक है, now for both of these things I will make single graph only. उसमें बस इंटरसेप्ट की वैल्यू और वहां पे जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी द सेम. ओके, सो इन दिस ग्राफ y is equal to mx plus c टाइप ऑफ ग्राफ यहाँ पे बनेगा. दिस इज द y, दिस पार्ट इज m माइनस साइन के साथ, m time is the x axis and this will be the slope c. So my y is ln a और log a, इन दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं, ln a or it will be log a. The y axis is ln a or log a, x axis will be time. ठीक है, now if I talk about the plot, then the plot is having a positive intercept, so it will be on the positive y axis, और यहाँ से start होगी, there will be slope like this. Now please remember that this slope is not going to touch the x axis because जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, that never goes for completion, है ना, ये हमने लिखाया था. 100% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज इनफाइनाइट, इन्फिनिटी लगता है, राइट. T 100% is equal to infinity. That means first order reaction never goes for completion. यानी A की वैल्यू, ठीक है, जब A की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो log A की वैल्यू जीरो नहीं होगी. सो इसको इनकम्प्लीट ही रखना, पूरा नहीं रखना है आपको. अब यहाँ पे दो चीज है आपके पास, एक तो इंटरसेप्ट, ठीक है. सो व्हाट विल बी द इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट अगर आप पहला वाला फॉर्मूला ले रहे हैं, ln A वर्सेस T ले रहे हैं, then the intercept will be ln, and if you are taking the other form, then it is going to be log A naught. अब बात आती है स्लोप की. सो ऑल्सो स्लोप इज ऑल्सो, यहाँ पे दो होगा स्लोप देखिए, इफ यू आर टेकिंग द इनिशियल रिएक्शन, पहला वाला इक्वेशन अगर आप देख रहे हैं, स्लोप इज गोइंग टू बी माइनस के. अगर आप दूसरा वाला इक्वेशन देख रहे हैं, देन इट विल बी माइनस के अपॉन 2.303. if the
graph is between ln a and time, so intercept will be ln a naught and slope will be minus k. But if you are taking log a versus t, then the intercept will be log a naught and the slope will be minus k upon 2.303. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. बहुत ज्यादा टफ तो नहीं हो गया ना एक ग्राफ में दो दो इक्वेशन? Tell me guys, is it fine? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग दोनों का मतलब देखिए प्लॉट सेम दिखेगा, जस्ट द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट आर गोइंग टू बी चेंज, स्लोप इंटरसेप्ट और वाई एक्सेस। ठीक है, दिस इज अनदर ग्राफ, राइट? एक और ग्राफ लिखिएगा, थर्ड ग्राफ, दिस इज गोइंग टू बी बिटवीन, और कौन सा इक्वेशन बचा, हाँ, ln a naught upon a is equal to kt और log a naught upon a will be equal to kt upon 2.303. This is also y is equal to mx type of graph. Here the y-axis is going to be ln a naught upon a, or it is going to be log a naught upon a. ठीक है, the x-axis is going to be time. Intercept तो है नहीं यहाँ पे, so the graph will go from start from the origin like this, और जो slope होगा यहाँ पे, अगर आप पहला वाला ले रहे हैं expression, then the slope is going to be only k. If you are taking this expression, then it is going to be k upon 2.303. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ ग्राफ, दैट इज बिटवीन टी हाफ एंड, हम बना देंगे, आप लोगों को टाइम देंगे लिखने का, डोंट वरी। फोर्थ ग्राफ, इट इज बिटवीन टी हाफ वर्सेस ए नॉट। ठीक है, द फॉर्मूला इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। अब इस पूरे फॉर्मूले में तो ए नॉट कहीं पे आ नहीं रहा है, दैट मीन्स टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, है ना? इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी भी हो जाए, टी हाफ इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सो आपके पास जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह का दिखेगा, यू हैव कांस्टेंट टी हाफ चेंज ही नहीं हो रहा है, no matter what the concentration of A is, T half is not changing. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. All the four graphs make sense? Yes or no? Yes, sir. अरे ठीक है, Yes. चलिए, आप लोग को ये इनिशियल 3 ग्राफ्स दिख रहे होंगे, चलिए प्लीज बनाइए। टोटल वैसे अगर देखा जाए ना तो 1 2 3 4 5 6 ग्राफ्स है टोटल, है ना? अगर लॉग और एलएन वाले एक्सप्रेशन को, अगर हम इक्वेशंस को अगर हम अलग अलग ट्रीट करें, तो वहां पे आपके पास टोटल 6 ग्राफ्स हो जाएंगे। डन सर। डन, आई होप। अब ये फोर्थ वाला कर लीजिए। हो गया सर। अच्छा वो भी हो गया, ऑल ऑफ यू गाइस आर डन, जी। चारों ग्राफ लिख ली सबने? मीर Yes, यू sir. कैन do the assessment, you can go to the Learnivio app and do the assessment. Is there anyone who is still not, who is still writing? Is there anyone who is still writing? Yes, sir. बाकी जिन लोगों ने कर लिया है, they can leave and they can do the assessment. First order reaction will be a topic. Please let me know na if you can see the assessment. सर नॉट अवेलेबल बता रहा है। Just a second.
अच्छा, लास्ट असेसमेंट से किसी को कुछ पूछना है तो बताइएगा। टेस्ट है? Sir, it ओके is ओके फाइन। available. देर ना, मीर आप देखो आपके में नहीं आ रहा है। नहीं सर, नहीं आ रहा। मीर आपके में नहीं आ रहा होगा सिर्फ। प्लीज एक्टिवेट फॉर मीर टू।